So we'll do some exercise questions. Actually, different forms of equation of line we have seen. There is one more method is there, normal form, that we will study later. ऐसे पूरा theory बता के जाएंगे तो आपको भी बोर हो जाएगा. So first question, look at that. Find the equation of the x-axis and y-axis. So equation of x-axis. What is equation of x-axis? Y is constant. Y is equal to constant है, y is equal to 0. Y is constant है, the horizontal line का equation. So x-axis में y is equal to क्या होगा? 0 होगा ना? 0. Yeah. So equation of x-axis y is equal to 0. Equation of y-axis x is equal to X is equal to 0. 0. This one already we have done, points law form. Okay. Third one, passing through 0, 0 and slope em. So you can again use points law form. एक point is given, slope is given. So y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus y1 is 0 because passing through 0, 0 into m into slope is m. It is m. It is given as slope is m. M into x minus x1. X1 is 0. So that means y is equal to mx. Okay. अंडरस्टूड. तो Yes, इसमें sir. से आपको ये एक चीज और समझ में आ गया, जो भी लाइन जो ओरिजिन से जाएगा, जैसे ये ऐसे वाला लाइन, सो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx. MX. ओके. हो सकते हो नीचे भी जाएगा वैसे, दैट इज ऑल्सो y इज इक्वल टू mx, बट इधर m क्या होगा? MX. नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव. इधर m क्या होगा? पॉजिटिव होगा इधर. Positive. या ओके. देन सो m का वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, m में से पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर व्हाट इट इज. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो. One point is given, passing through, one point is given, passing through 2 comma 2 root 3. Okay. Then inclined with x-axis at an angle of 75 degree. So rough picture. uh, so 2 comma मतलब इधर ही होगा, जैसे something like 2 comma 2 root 3 whatever it is. 3. Inclined with x-axis at an angle of 75 degree. So line lies above है क्या, means going up है क्या, going down है क्या? It is going up or going down? Down. डाउन ही होगा, क्योंकि तब नहीं, डाउन नहीं X होगा. axis. डाउन हो गया तो देखो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना. Yes, sir. सो इधर तो ये तो क्या होगा 75, ये दिस इज नॉट 75 ना. Yes, sir. तो उसका मतलब क्या होगा लाइन. सो इट शुड बी समथिंग लाइक, इफ दिस इज द पॉइंट, सो ऐसे हम थोड़ा सा देख लेना, 2 comma 2 root 3, then the line will be something like this, then only inclined at an angle of, here this is 75. 75 degree, because whenever we say angle we always measure in the anti-clockwise direction unless and until they specify. So एक point is given, one point is there. अभी हमें स्लोप चाहिए. सो स्लोप के लिए फॉर्मूला है m is equal to tan 75 degree, isn't it? Right. So tan 75 कैसे मिलेगा? आपको पता है 75 इज नॉट ए स्टैंडर्ड एंगल, बट इसको आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री. राइट. Degree. तो tan a प्लस tan, आपका फॉर्मूला है tan x प्लस y. दिस फॉर्मूला इज tan x प्लस tan y divided by 1 minus tan x tan y. So it is tan 45 degree plus tan 30 degree divided by 1 1 minus minus tan 45 degree into tan 30 1. degree. Yes, tan sir. 45 tan 45 कितना है? 1. 1.
tan 30 opposite side by adjacent side. Opposite side is 1 divided by adjacent side is root Root 3. 3. So this is right. So it is 1 plus root 3 divided by 1 minus root 3. Right. So आप 1 by rationalize root 3. no sorry 1 by root 3. 1 plus 1 by root 3 divided by 1 minus 1 by root 3. क्योंकि इधर 1 into 1 by root 3 आएगा. So 1 minus 1 by root 3. Yes, sir. So ये हो जाएगा root 3 plus 1 divided by root 3 है. Denominator में भी एक root 3 minus 1 divided by root 3 है. तो Root 3, root 3. root 3 कैंसिल हो जाएगा. इसको rationalize करने के लिए root 3 minus 1 से ऊपर नीचे multiply कर देना. So ऊपर हो जाएगा a plus b into a minus b. a plus b into a minus b से a square minus 3 minus 1. नहीं root 3 plus 1 से multiply कर देना क्योंकि conjugate से multiply कर देना. So ऊपर आएगा root 3 plus 1 Whole whole square. square. नीचे आएगा 2 क्योंकि a plus b into a minus b a square minus 3 b minus square 1. 3 minus 1 2. So ऊपर root 3 का square 3 3 plus 2 root 3 2ab a plus b the whole square is a square plus plus 1. 2ab plus b Plus 1. square divided by 2. So ये हो जाएगा ऊपर लिखता हूँ 4 plus 2 root 3 divided by 2. So आप इसके 2 से दोनों टाइम को 2 डिवाइड common. करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 plus 2 plus root 3. root 3 मिलेगा. Root 3. So slope Yes, मिला sir. 2 plus root 3. So now equation is so I will delete this one this much area. So now you have a point. Point is 2 comma 2 root 3. This is a point, and slope you got as 2 plus root 3. So equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus this is your x1 y1. So y minus 2 root 3 is equal to m is slope you got as 2 plus root 3 into x minus x1 x minus 2. Okay. Yes, sir. Yeah, that is enough. It is okay. If you want you can simplify further like it is y minus this is okay, this step is okay, idhar tak okay. If you simplify further y minus 2 root 3 is equal to 2 into x 2x plus 2 in root 3 into x root 3x plus 2 into 2 2 into minus 2 minus Yes. 4 Minus minus 4. 2 root 3. ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So A root 3x इधर लाएंगे तो. so वो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. Right? Yes, sir. So y plus 4 हो जाएगा is equal to you can take x common. So 2 Yes. plus root 3 into x. Yes, sir. और standard form में लिखना है तो 2 plus root 3 that is coefficient into x minus y minus 4 is equal to 0. 0. So that's the standard form. Okay. So here Yes, actually sir. main point was finding the slope, but tan 75 that is not in the standard angle. So you have to use the addition formula. Okay. Now next question. Question number 5. So हमेशा rough picture draw कर देना, that will give you a clear idea. So your y-axis, your x-axis. Now here what it says intersecting ये सब equation of line निकालने के लिए है. Intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with the slope minus 2. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin. So this is origin, right? 3 units to the left of origin मतलब here, that is minus 3 comma 0, right? And with slope minus 2.
सो स्लोप -2 मतलब लाइन कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। जल्दी बोलो। स्लोप इज नेगेटिव मतलब लाइन इज गोइंग अप और लाइन इज गोइंग डाउन। Slope negative Down. means down, line is going down, so this is a line, so you have to find the equation of this line. Okay, so slope is given as -2. so हो गया ना, आपके पास एक पॉइंट है, स्लोप है, so equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is your point, say this is your x1 y1. Okay, this is your slope, here is your slope. So y minus y1, y minus 0 is equal to slope -2 into x minus x1 -3. Minus 3 is +3. +3. So it is y minus 0, y is equal to -2 into x plus 3. Okay, equation. So y is equal to -2x minus 6. और Yes, राइट sir. साइड में आएंगे तो 2x plus y plus 6 is equal to 0. 0. That's all. Okay. So here they are giving you sometimes slope, sometimes point, sometimes angle making with the x-axis. We are supposed to find the equation of the line. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. सो सबसे पहले तो रफ पिक्चर ड्रॉ कर देना. क्या बता रहे हैं कि लाइक इंटरसेक्टिंग द वाई एक्स द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन. वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव, दैट मींस इधर 0,2 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. So making an angle of intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. Positive. Downward आएगा sir. डाउनवर्ड ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मतलब उन्होंने क्या बताया, इस साइड का ही है. Yes, sir. सो उस साइड को, सो उसका मतलब जो लाइन तो ऐसे ही जाएगा. सो देन ऑफ ये कोर्स एंगल 30 है. ये एंगल तो 30 डिग्री नहीं होगा ना. तो उसका अंदर मतलब का. उन्होंने जो बोला मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री मतलब इधर 30 डिग्री बना रहे. Yes, sir. Intersecting the y-axis to distance above the origin, making a 30 degree the positive direction of the x-axis. नहीं, ऐसे नहीं. Making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. 1 second. So जब भी हम एंगल निकालते हैं, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, राइट. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो हम तो इधर से एंगल निकालते हैं, इधर से इस डायरेक्शन में. ओके, ऐसे ही निकालते हैं एंगल. सो दैट इज नॉट द लाइन. द लाइन इज दिस इज द लाइन. ओके, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मतलब डायरेक्शन. They didn't say the positive side, positive direction, this direction. This is the positive direction. This is a positive direction. Whose direction? So that means this angle. This angle is 30 degree. 30 degree. That is the meaning of that. Okay. Yes, sir. Yeah. So again, the same thing. You have a point and you have the slope. So equation is slope is equal to tan 30 degree, 30 which is equal to 1 by 1 by root root 3. Okay, so equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is your x1 y1 point. So y minus y1, y minus 2, slope is equal to 1 by root 3 into x minus x, x minus 0. That is y minus 2 is equal to 1 by root 3 x. हो गया, that is answer. अभी और चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. root 3 into y minus 2 root 3 is equal to x, or in other words x minus
root 3y plus 2 root 3 is equal to 0. 0. Clear? Yes, sir. Now, last question हमने अभी किया था, passing through 2 points. So I have shown you that one. Okay. Now we will see. This is known as normal form. अभी तक हमने देखा उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. हम लाइन का डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में, लाइन का इक्वेशन तो सेम ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने के लिए हम सीख रहे हैं. और डिफरेंट फॉर्म्स में लिखेंगे तो भी उसको रिड्यूस करेंगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा ही आएगा. सो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको दो चीज चाहिए. वन इज नॉर्मल, मतलब क्या पता है क्या नॉर्मल मतलब? डू यू नो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज परपेंडिकुलर. दैट इज नोन एज नॉर्मल. Okay, so two things we need to know. One is length of the perpendicular, that means length of the normal from origin to the line. That means, so different situation I will show you. देखो, I will show you 4 different situations. So these are the 4 different ways the lines can come. So length of the normal मतलब origin से आप perpendicular draw कर देना. Origin से you have to draw perpendicular. So this perpendicular distance. This is perpendicular. Origin से एक perpendicular line को draw कर देना. वो perpendicular का distance. Do you understand? This one we will have to know. Length of the perpendicular from origin to the line. Okay. Let it be, say, let it be P. Okay. For example, let it be P. Say P. That means this distance. This is P. Here, this distance. This is P. This is P. This is P. The distance. Are you understanding? So one thing you should know is the length of the perpendicular from the origin to the line. Second thing you should know, or we should know, that is angle which normal makes with the positive direction of x-axis. So जो x-axis positive, this is the, here is a positive direction of the x-axis, we know. तो वो normal positive directions of x-axis जो बना रहे angle, say you can call it as a, just for a moment I'm calling it as a some omega or w. So here you can see this is the angle w, because that's a normal, the angle between normal and the positive direction of the x-axis. Or here, this one, that is your w. So here, this is your w.
Are you understanding? And here this is W. So angle we always takes in the anti-clockwise direction. So these are the two things we should know while writing the normal form of the equation of the line. So one is length of the perpendicular from the origin to that line. Second one is the angle that the normal and positive direction of the x-axis. Positive direction of x-axis and the line. Sorry, and the normal to the line. Normal. इन दोनों के बीच में जो angle, let it be w, नहीं तो omega. Okay. Then equation of the line. So now I will just come to that equation directly. Equation of the line is x cos omega plus y sin omega is equal to p. Okay, that's all. That is known as the normal form. So if you know the perpendicular distance from the origin to that particular line, that is p, and the angle omega or w that the line makes with the normal, then equation of the line is x cos omega plus y sin omega is equal to p, and this is known as the normal form of the line. Okay, clear? Yes, sir. या दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. अभी इसमें से ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट इस चैप्टर में, बट इसके आधार पर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना है. ओके, नाउ वी विल गो टू द प्रॉब्लम. सो कीप इन माइंड normal form of the equation of the line is x cos omega plus y sin omega is equal to p. Okay. Okay, look at the question number 8. These are all finding the equation of the line. Perpendicular distance from the origin is 5 units. So you have to draw the rough picture. Perpendicular distance from the origin is 5 units, and the angle that makes with the perpendicular with the positive x-axis 30 degrees. So it will be like this, right? This is the case, correct? Because this distance is, so this is a perpendicular, this distance is 5 units, and this angle is 30 degree, isn't it? So angle से हमें पता चलेगा acute angle 30 degree between 0 and 90 है, तो angle ऐसे आएगा. First the line first quadrant से pass हो जाएगा. Between 90 and 180 है, तो line will be passing through the second quadrant. Between 180 and 270 है, तो line will be passing through the third quadrant. And between 270 and 360 है, तो line will be passing through the fourth quadrant. Correct? So here distance, perpendicular distance from the origin is 5 units, and the angle made by the perpendicular with the positive axis 30 degree. So write the equation of the line. So equation of the line is x cos omega plus y sin omega is equal to p. So the x cos omega is 30 degree plus y sin 30 degree is equal to 5. That's all. Understood? That's the equation. Clear? अभी आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. x cos 30 कितना है? Cos 30 is adjacent 1 by side. root 3. Adjacent side over hypotenuse. 30 का 1 adjacent by side है root 30 का adjacent side root 3 divided by 2 plus y into sin 30 is 1 by 2 is equal to 5. Just multiply with 2 everywhere. So root 3x plus y is equal to 10. So that is in linear form. Got it? है समझ में? Yes, sir. Okay. Next question.
The vertices of triangle PQR is given. Find the equation of the median through the vertex R. So एक triangle of picture सबसे पहले triangle is given. Okay, this is question number 9. P Q R. Then P is 2 comma 1, Q is minus 2 comma 3, R is 4 comma 5. Find the equation of the median through the vertex R. R से जो जा रहा है मीडियन, मीडियन मतलब वन वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, राइट? दिस इज द मीडियन which is passing through R. So we have to find the equation of this. So this is a line. कैसे निकाल सकते हैं? How can we find? Tell me fast. Time जा रहे. How can we find? Fast. लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने कितना बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाई किया ना. एक तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, सो इसमें से पॉइंट है बट स्लोप नहीं है. दूसरा है कि 2 पॉइंट फॉर्म, सो इसमें से एक पॉइंट तो ऑलरेडी है, दूसरा कोई पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो मीडियन है ना, मीडियन है तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया ना. आर यू देयर? यस सर। मिड पॉइंट, मीडियन मतलब क्या है? वर्टेक्स से दूसरा opposite side का mid point so join कर रहे. That means this you can call this as yes. Yes is the midpoint. So midpoint formula use करके x का coordinate निकाल सकते हैं. 2 plus minus 2 divided by 2 and 1 plus 3 divided by 2. 2 plus minus 2 0, 0 by 2 0, 0 comma 1 plus 3 4, 4 by 2 2. अभी आपको 2 पॉइंट मिला 0,2. हाँ. So therefore अभी इक्वेशन ऑफ आर यस. सो आपके पास फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला. y माइनस y1 इज इक्वल टू चेंज इन y, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1. सो कोई एक कोई x1 y1 पकड़ो. दिस इज x1 y1. यू कैन टेक दिस एज x2 y2. So y minus y1, so y minus 5 is equal to y2 minus y1, 2 minus 5 divided by x2 minus x1, 0 minus 4 into x minus x1, x minus 4. So y minus 5 is equal to 2 minus 5 is minus 3, minus 3 divided by 4, that is 3 by minus 4. So minus by minus plus हो जाएगा 3 by 4 into x minus 4. हो गया. दिस इज आंसर. ओके, उधर ये आंसर हो गया. And if you want to simplify, you can further simplify it. Just multiply with the 4 on both sides. So you will get like this. 4 into y, 4y, 4 into minus 5, minus 20 is equal to 3x minus 12. Okay. So 3x, if you can take 4y to the right side, minus 4y. If you take minus 20 to the right side, it is plus 20. So it is minus 12 plus 20, that is plus 8 is equal to 0. I say linear form में भी लिख सकते हैं. Because we know that कोई भी straight line, उस straight line का equation हमेशा linear equation in 2 variable ही होगा. So ये तो हमने अलग अलग टेक्निक से उसका इक्वेशन निकाल रहे. निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही मिलेगा. तो आपने एग्जाम में इधर तक ही लिखा, ठीक है, चलेगा. यू विल गेट द मार्क्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Find the equation of the line passing through minus 3 5
and perpendicular to the line through the points 2, 5 and 3, 6. So I say इधर एक point है, point is -3, 5. So एक line ऐसे हो रही है कि this line is passing, एक line is passing through -3, 5. This is what statement. A line is passing through -3, 5. Now, not only that, it is perpendicular to the line joining. So there is another 2 points. Say rough picture है, so don't worry. 2, 5 and -3, 6. ऐसे एक लाइन, ये 2 पॉइंट से जा रहे, ऐसे वाले एक लाइन, एंड हमारा जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है. दिस इज व्हाट इट इज गिवन. आवर लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 and our line is perpendicular to a line passing through the points 2, 5 and -3, 6. So हमें इसका इक्वेशन चाहिए. What is the equation of this line? What is the equation? इक्वेशन क्या है? That is the question. So उस लाइन में एक पॉइंट तो हमें पता है. Okay, so one point is there. अभी हमारे पास स्लोप है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट स्लोप तो पता नहीं. सो और एक पॉइंट है तो भी इक्वेशन निकाल सकते, बट और एक पॉइंट भी नहीं. सो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? Tell me how to find the equation of this line. This red line is our line. How can we find? So one point is there. No, one point is there. Okay, one point is there. -3, 5. अभी आप और एक पॉइंट निकालो और स्लोप निकालो. Is there any method? जल्दी. अरे what is given? ऐसे फालतू कुछ नहीं देगा ना. What is given? These two lines are perpendicular, right? If two lines are perpendicular, what is the speciality of the slopes? If two lines are perpendicular, what is the speciality of the slopes? Sir, product of slope is -1. So first one का slope let it be m1. This green line का slope let it be m2. So हमें पता है m1 into m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए. m1 हमें चाहिए, हमें पता नहीं, बट m2 तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 points are there. So m2 is change in y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 5 minus y1 6 divided by x2 2 minus -3. 5 minus 6 is -1 divided by 5. So नेगेटिव प्रॉपर्टी का तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. नहीं है तो m1 इंटू -1/5 इज इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें से आपको मिलेगा m1 इज इक्वल टू 5. स्लोप भी मिल गया ना. सो नाउ इक्वेशन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now this is your point. So y minus 5 y1 is equal to m. अभी आपको मिला 5 into x minus x1 x minus -3. हो गया आंसर. क्लियर. और y minus 5 is equal to 5x plus 15 और 5x minus y plus 20 is equal to 0. Got it? Understood? So इधर स्लोप नहीं था, हमने कंसेप्ट यूज किया. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, नहीं है तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है. सो इस सेकंड लाइन में 2 पॉइंट था, वो 2 पॉइंट यूज करके सेकंड लाइन का स्लोप निकाला. सो उसका